Hi, teachers and students. Today we'll be discussing about United Nations and its organizations. Today, the part one will cover why UN was formed and also the principal organs of UN. So we'll be discussing that. United Nation was formed on 24th October 1945 वर्ल्ड वॉर टू के एंड में एक्चुअली डिसाइड किया गया था कि अब हम एक और वॉर पूरा वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता ऑल्दो इसकी बातें इसके बारे में डिस्कशंस बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी व्हेन द वर्ल्ड वॉर टू वाज गोइंग ऑन इन 1941 अगस्त there was a Atlantic Charter signed by US President Roosevelt and British Prime Minister of then at that time Winston S. Churchill. 1942 में अगेन 26 अलाइड नेशंस आई साथ में एंड दे साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट इज इन वाशिंगटन डीसी एंड देन तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन जहाँ पे यूएस ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन साथ आए थे इसी बारे में बात करने एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड फाइनली ऑन 24th of October 1945 द यूएन वॉज फाउंडेड तो इसीलिए हम 24th अक्टूबर को यूएन डे भी सेलिब्रेट करते हैं एंड इंडिया ऑफ कोर्स इन 6 days बिकॉज इंडिया अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था इन 6 days इंडिया ऑन 30th October 1945 इंडिया joined actually United Nations. So वर्ल्ड वॉर टू डिज़ास्ट्रस बहुत अफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड पे इन अगस्त एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्रीज वर थिंकिंग दैट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें वर्ल्ड पीस या कुछ सिक्योरिटी करने के लिए हमें वॉर की तरफ नहीं जाना पड़े so to avoid wars and so we needed an international organization which can represent the needs of all the countries in the world and टेबल पे लेके आए दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को रादर देन किलिंग ईच अदर इतनी दो वॉर्स हो चुकी थी लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद विद द सेम ऑब्जेक्टिव बट उसकी होने के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई League of Nations was ineffective, not able to control the problem, and every time a question is asked why we need these international organizations. So if we see today, we'll be discussing that, and also these are the topics to be covered in the class today. We'll be covering why United Nations is needed and what are its objectives. What is right now currently UN more doing into more task of UN right now is. Then we'll talk about the six. Now we are only four. Actually, we have only five organs now, but we do teach Trusteeship Council. In 90s, it was discontinued with the independence of the last Palau. I think so was the last time Trusteeship Council worked. So we don't have Trusteeship Council working at present. We have five principal organs of UN working, and I told you I was discussing that people always ask, and why do we need these organizations? So yes, we need these organizations. There are two main reasons, as said, that these organizations like UN, the main organization, it helps to actually maintain peace. Yes, peace, of course, is the main objective why we need organizations like UN, and they also help countries to cooperate to make better living conditions. World has common problems, poverty, environment problem, and today also you can see a very good example how UN is into an active role right now. It's playing an active role in the current situation of the health epidemic, pandemic, which has affected the whole world right now. So WHO is playing a very active role in this. So UN is, of course, helping the whole world right now to make world a better place. So हमें ज़रूर चाहिए हैं यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को कॉमन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें और कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को
टेबल पे लेके आए फॉर डिस्कशन, नॉट टू हैव war at every time. Let us start discussing the main topics today. Why we need, and in 1945 the UN was founded. We have 193 currently, made up of 193 member states. The mission of and the work of United Nations are guided by the purposes and principles contained in the founding charter. जो charter में उसके लिखे हैं purpose, वो principles उस पे ही चलता है. United Nations, the first principle and the first thing which comes out of these type of organization and why they are formed is maintaining international peace. So UN came when the disaster was there after the World War, Second World War. There was only one mission in the world, that how to maintain international peace and security. So UN has always been trying to actually control and prevent any conflict. So peacekeeping is the main objective. Creating the condition which allow peace to flourish is also one of the objective of UN. The UN Security Council की main responsibility है. UNSC, the most popular organ of principal organ of UN, is responsible for international peace and security. The General Assembly also and the Secretary General play major important role in facilitating these things in the world. So maintaining international peace and security is the first objective of UN. And second, you all are aware कि वर्ल्ड में बहुत वायलेशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स की. So the human rights term was mentioned 7 times in US founding charter. So you have to promote the human rights. Even the governments of various countries, they violate these human rights, and so UN has to come in and help those people who are affected. So it became the guiding principle. In 1948, the Universal Declaration of HR, human rights, brought human rights into the realm of international law. Since then, this organization have very actively protected human rights through legal instruments on the ground activities. And thirdly, UN delivers humanitarian aid. There are many countries devastated by natural calamity or war. So UN का पर्पस है कि वहाँ तक एड पहुँचाई जाए. इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज डिवास्टेड हो गई थी इन यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स. सो UN came and helped them to rebuild and restructure. ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दी जाती है आज भी सीरिया में, आज भी येमेन में, अफगानिस्तान में, lot of areas of Somalia, Sudan, lot of humanitarian aid has been provided by the UN. Then UN also promotes now sustainable development. Yes, you all know Earth is of course affected by these human activities, and environment is totally it's overused and it's totally in trouble. So now UN also comes in and talks about sustainable development, social well-being, protection of the environment, using best methods so that the the temperature, the global warming does not increase. So all this is promoted by the United Nations. It always works for the well-being of the people and also global environment. And then United Nations also, fifth point is upholding the international law. UN Charter and its preamble set an objective to establish conditions which are under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other source of international laws can be maintained. So अगर कोई treaty तोड़ता है तो action is taken, sanctions are being imposed, and sometimes the use of force is also there. Like one happened in Iraq in 1991 when Iraq attacked Kuwait, and under the UN order, these forces attacked Iraq and got Kuwait freed from their from Iraq. So that is UN sanctions. अगर वो law नहीं मानता, you have to UN has to take action. The UN Charter codifies the major principles of international relations, from sovereign equality of states to the prohibition of the use of force in international relations. So severe actions have been taken in past on countries which do not adhere to the rules.
So it upholds the international law. So ICJ is also working towards that. Let us start with the first main organ of UN, that is General Assembly. जैसे कंट्रीज की पार्लियामेंट होती हैं जहाँ पे सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं, वैसे ही यूएन का है जनरल असेंबली. ऑल द मेंबर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन हैव टू participate in this meeting. Usually September, I think September every year. अभी 74th session 2019-20 was in Ghana. It occupied the first seat. Yes, General Assembly. There are 193 member states, each one with one vote. Major decisions require a two-third majority. एंड सब मिलते हैं, डिस्कस करते हैं वर्ल्ड में क्या इश्यूज हैं. जनरल असेंबली मेन इट्स लाइक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट. पूरा वर्ल्ड पार्लियामेंट है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड इश्यूज रेज करते हैं जो आगे जाके अदर ऑर्गन्स में डिस्कस होते हैं. So every year in September this happens. It has a New York. Their headquarters in New York, uh, where they met the first time, and also जब भी कोई लॉ पास करना होता है इस पार्लियामेंट में तो टू थर्ड मेजोरिटी से वो लॉ पास होना है, जो मैंडेटरी होता है मानना बाय द मेंबर कंट्रीज. एंड समटाइम्स सिंपल मेजोरिटी आल्सो 51%, बट दैट दो डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी पीपल. दिस इज यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, इसको पार्लियामेंट कहते हो. इट इशूज कवर ऑल, इट कवर्स चार्टर में जो भी लिखा हुआ है रूल्स में. तो इसमें डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ सब जनरल असेंबली में डिस्कस होते हैं. सो दैट इज जनरल असेंबली. The main organ, of course students will be discussing Security Council in detail because इसका सिलेबस में काफ़ी मेजर पोर्शन अभी है इसका ऐड किया हुआ है. वाई वी नीड एक्सपेंशन इन सिक्योरिटी काउंसिल, बट बेसिक्स यू शुड ऑल नो. सिक्योरिटी काउंसिल के पहले 11 मेंबर्स थे और 65 में उसके बढ़कर मेंबर हो गए. now 15 members, 5 members are permanent, and there are 5 permanent members and 10 members temporary. ये है मेन ऑर्गन जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं. जब कोई वर्ल्ड की पीस को थ्रेट करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट those countries. And these 5 permanent members, US, UK, France, China and Russia, ये पांचों के पास एक एक्स्ट्रा पावर है, पावर वीटो पावर, कि जब सारे मेंबर्स कोई किसी भी रेजोल्यूशन को पास भी कर रहे हो, अगर if one of the permanent members of Security Council says no to it, that resolution is not passed. Although there are suggestions in the world right now to give more power to other countries also and expand the membership of Security Council. So we'll do this in detail. Security Council is the council which talks about peace and security in the world. Third organ is again an important organ. नाम से you can all understand seeing the name of this organ. This organ talks about इंटरनेशनल जस्टिस की बात करते हैं. तो सारे केसेस जो दो कंट्रीज़ के बीच में आते हैं, कोई कंट्रोवर्सी, एनी प्रॉब्लम विच इज़, सो वो सारे केसेस कहाँ लड़े जाते हैं. दिस इज़ वर्ल्ड कोर्ट. वर्ल्ड कोर्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. या इट इज़ अ कोर्ट. ऑरिजिन्स ये लीग ऑफ नेशन से स्टार्ट हुआ था. इसका आइडिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेट करे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को, कि वो कहीं वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए. सो केस लड़े जाते हैं वहाँ पे. इंडिया पाकिस्तान का भी केस लड़ा गया था इन ICJ. द इंस्टीट्यूशन वाज अगेन UN की फाउंडिंग में इसको अडॉप्ट किया गया. पहले इसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. The court decisions are binding and its broad jurisdiction encompasses all cases which the parties refer to in it and all matters specially provided for the Charter of UN or in treaties and convention in force. So आपको binding है, आपको इनकी कोर्ट की बात माननी पड़ती है. If you don't, then action is taken. Action is same in terms of sanctions, more of sanctions. So International Court of Justice is an important organ of UN.
जो वर्ल्ड के केसेस हैं वो हम यहाँ पे लड़ सकते हैं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए। इसकी अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन एंड इसकी स्ट्रक्चर की, तो वी हैव 15 judges of the court elected by both General Assembly and Security Council, voting independently. No two judges may be national of the same state. एक कंट्री के नहीं हो सकते, सब अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। Are to represent the cross section of the majority of legal system of the world. Judges serve 9 years term and are eligible for re-elections. 9 साल तक वो करते हैं और फिर वो री-इलेक्ट भी हो सकते हैं। The seat of the world court is in Hague. इसकी जो मेन हेड ऑफिस जिसको आप कहते हो। So at times countries also have refused to acknowledge the jurisdiction or the find of the court. For example, ऐसा हुआ है, लोगों ने रिफ्यूज किया है इसके jurisdiction को। when Nicaragua sued United States in the court in 84 for mining its harbor, the court found in favor of Nicaragua, but US refused to accept the court decision और कहा गया कि ये कोर्ट की jurisdiction में नहीं आता है, ये US का इंटरनल मैटर है, वो बाउंड्री इंटरनल। It blocked Nicaragua's appeal to the Security Council and withdrew from the compulsory or general jurisdiction of the court, so which it had accepted in 1946. So there are limitations of ICJ, there are limitations of UN, where powerful countries like US have taken advantage, और जहाँ उनके फेवर में बात नहीं हुई है, they have tried to undermine the jurisdiction of ICJ. There are many other cases. This is one of the examples given. So next important organ, students, is very important again. It's ECOSOC. You must have learned economic and social council. Again, पहले था, it was consisted of 18 countries, but when charter was amended in 65 and then in 74, their number increased from 18 to 54. Members are elected for 3 years. ये क्यों बनाया जाता है, बनाया गया है? It's very important. वर्ल्ड के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये सब ह्यूमन राइट्स, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, ये सब चीज़ें इकोसॉक में डिस्कस होती हैं। Members are elected for 3-year terms by the General Assembly. 4 of the 5 permanent members of Security Council, US, UK, Soviet Union, that was Russia now, and France, have been re-elected continually because they provide funding for most of the ECOSOC's budget. तो चाइना को छोड़ के बाकी सब कंटिन्यूसली अब तक क्या हो रहे हैं, री इलेक्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ एनी यूएन सब्सिडरी बॉडी। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। डिसीजंस आर टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी वोट, designed to be the UN's main venue for discussion of international economic and social issues. ECOSOC नाम से बल रहा है, directs and coordinates the economic, अब economic जो disaster आया वर्ल्ड में, ECOSOC is working towards it, then it advises IMF and World Bank to take actions, and also it talks about social, humanitarian and cultural activities पे भी, और यूएन की सारी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको सुपरवाइज इकोसॉक करता है। सो ऑल दीज एजेंसीज टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजीज एंड ऑल्सो योर health and your IMF and World Bank, they are all supervised by ECOSOC. They promote universal respect for human rights. They work for global cooperation on health, education, and cultural related areas. So ECOSOC talks about economics and social issues with 54 member states and a separate budget. Yes. So when we talk about ECOSOC, we get to know more of ECOSOC by few lines which are there. ECOSOC conducts studies, formulates a resolution, recommends and conventions for considered by General Assembly, and most of ECOSOC work is performed in functional commissions on topics such as human rights, drugs, narcotics की बात हो, population की बात हो, social development, status of women, science and technology, and all these topics सारे continents को cover करता है। very important when it comes to agencies जो काम करती हैं वो सारी ECOSOC की recommendations पे ही काम करती हैं। Next organ is again very important organ, still functioning, and actually the main function, not still functioning, it's the main administrative office, that is Secretariat.
जो हमारा सेक्रेटरीट है, it influences the work of United Nations to a much greater degree that indicated in the UN Charter. It is responsible for preparing numerous reports, सारी report, सारा office work, studies, investigations, in addition to the major tasks, interpreting, providing service to large number of meetings कराना अंडर चार्टर, स्टाफ रिक्रूट करना, पूरा यूएन के ऑफिस जो चल रहे हैं वो सेक्रेटरीट, सम मेंबर सेक्रेटरीट आर एंगेज्ड ऑन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, सम अदर आर टेम्परेरी असाइनमेंट्स। तो सारा काम जो ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ यूएन इज नोन एज द सेक्रेटरीट एंड द सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस राइट नाउ इज द secretary general. He works there and he is in charge of the secretariat, and it influences the secretariat also. The secretary general is the principal administrative officer of the UN, elected for 5 years, renewable term by the two-third vote recommend करें तो, और he serves as the chief administrative officer at all the meetings and carry out any function of the organs entrusted to the secretary. वो oversee करता है preparation of UN budget. Secretary General has important political functions, being charged with bringing before the organization any matter of जो भी world peace को threaten करेगा तो सामने सेक्रेटरी जनरल आएगा। कितने सेक्रेटरी जनरल्स को एक्चुअली वो भी मिला हुआ है नोबल प्राइज फॉर पीस, so UN gets the Nobel Prize for Peace and he figures out the world affairs. The Secretary General also serves as a high level negotiator, तो वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स का नेगोशिएटर हमारा सेक्रेटरी जनरल जो सेक्रेटरीट को हैंडल करता है। एंड द लास्ट ऑर्गन स्टूडेंट्स, बहुत कम जानना है इसके बारे में आपने, ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था एक्चुअली उन कंट्रीज़ के लिए जो कंट्रीज अभी भी कॉलोनियल रूल में थी, या जब वो आज़ाद हुई तो ट्रस्टी बन गई उन कंट्री, जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई या इंडिपेंडेंट नहीं हुई। सो ट्रस्ट टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करने की जॉब दी गई थी। परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दैट डिड नॉट एडमिनिस्टर ट्रस्ट टेरिटरीज and other UN members elected by General Assembly. Each member had one vote and decisions were taken by a simple majority of those present. With the independence of Palau, जो last country थी, the island, the last remaining trust territory in 1994, the council now is terminated its operation. No longer required to meet annually, the council may meet on the decisions of its president or by any request. So it does not operate now. Since 1994, new roles for the council have been proposed, including administering the global commons, ये काम करते हैं वो, and serving as a forum for minority and indigenous people. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एक्टिवली अब काम नहीं कर रहा है। तो ट्रस्टी बनाया गया था उन कंट्री का जो आज़ाद नहीं हुई थी या रिसेंटली आज़ाद हुई थी, जो अपने पैरों पे खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था। विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द लास्ट नेशन 1994, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट वर्किंग एनी मोर, और these are the principal organs. Surely we have lot of agencies working under these organs जो बहुत important हैं, इस साल सिलेबस में ऐड भी कर दी गए हैं। So we'll be talking about those agencies in class number 2. So let us see what we have done today. We have done 6 principal organs of United Nation and what United Nation does. United Nation के objectives क्या होते हैं, and which are maintaining international peace and security, human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, and also uploading of international law, ये UN करता है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं हमारे पास इसके, जनरल असेंबली, द पार्लियामेंट, पीस एंड सिक्योरिटी हैंडल करने वाला सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिस कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट इज ICJ, वर्ल्ड के इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स इश्यूज का, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, everything it is discussed under economic and social council. Secretariat is the office of the secretary general where all the task is done and all the decisions are implemented actually. And trusteeship council was a trustee but now no more in operation, as in 1994 the last independent country Palau के साथ ही इसका function खत्म हो गया। So these are the 6 organs of UN. Students, you have to
study. And lastly, just ask teachers, ask your students, and students ask your friends to go for EcoVisioner app. When you go there, you will be finding your political science, economics, business studies, and English and other host of other subjects free chapter-wise tests which you don't have to buy, and also a lot of study material is free of cost. You have previous year's board CBSE board papers uh, uploaded there. We have free videos of difficult concepts, and if you want, you can have paid app classes जैसे अभी हो रही है, which is full year classes by experts for only 1,000 rupees. And any other information about the Olympiad or books issued by EcoVisioner, you can contact on the given numbers. Thank you very much. Stay fit, stay healthy. God bless you.